एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ की हम बात कर रहे हैं तो एज़ फार एज़ एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ आर कंसर्न उनका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट वी नीड टू पॉसिबली डिस्कवर द सॉल्यूशन, और वो we might be the first one to discover the solution, or we might be the second one, or probably we might be the one who are following the footstep of someone else who actually discovered the solution in the first place. हम हो सकता है हम किसी का इजाद करता या किसी का दरियाफ्त करता हम सोल्यूशन जो है वो अप्लाई कर रहे हों, बट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है एक्सीडेंटल डिफिकल्टीज़ का। और इसमें एक और भी है जी, जो है टिप है कि पाथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द रिजल्ट ऑफ ओवरकमिंग। अगर हमें माजी में एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ को कन्फ्रंट करते रहें और हमने उन्हें सक्सेसफुली कन्फ्रंट किया, तो अगर मुस्तकबिल में अगर सिमिलर टाइप की डिफ़िकल्टी हम अकर होती है तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू एलिमिनेट और अवॉइड दैट एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़, राइट। अगर हम फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करें, इनएडिक्वेट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड एब्स्ट्रक्शन, we know if we have to develop a project, right, and we know uh, if we have knowledge of multiple languages, right, so we must be able to know very well कि कौन सा जो है लैंग्वेज है उसकी लिमिटेशन क्या है, कौन सी लैंग्वेज है उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क है जिसकी लिमिटेशन ज़्यादा है किसकी कम है, एंड सो ऑन। सो इट ऑल हैज़ टू, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि अगर एक्सीडेंटल डिफिकल्टीज को हमने कन्फ्रंट करना है, सो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इन द रेलेवेंट डोमेन, द मोर बेटर वी आर टू कन्फ्रंट विद एक्सीडेंटल डिफिकल्टीज। जैसे अभी हमने बात की थी हम प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट और एब्स्ट्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको पहले भी दी गई है कि लेट्स से आई वांट टू डेवलप अ लाइब्रेरी सिस्टम, और मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी गुड एट ऑल लैंग्वेजेस, मुझे असेंबली लैंग्वेज भी आती है और मुझे जावा एंड सी प्लस प्लस भी आती है। तो मेरे पास चॉइस ये है कि मैं विच लैंग्वेज आई शुड यूज़, कौन सी लैंग्वेज मैं यूज़ करूँ। पहला तो शायद जहन में ख्याल आए कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड सी प्लस प्लस, although I know all of them very well, but it is not a very wise decision to start building a library system using assembly language. उसकी वजह ये है कि assembly language is a low level language, right, and I will have to write so many lines of code. Same thing I will be able to do in Java by just one simple statement, लेकिन assembly में करने के लिए मुझे multiple statement लिखनी पड़ेंगी even to initialize a variable and even declare a variable. So by making a right choice, ठीक है, I can still avoid uh, I can reduce the probability of occurrence of accidental difficulty इन दिस केस फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर मैं असेंबली को नहीं चूज़ करता, मैं जावा सी प्लस प्लस को चूज़ करता हूँ, इट डज़ नॉट मीन कि मेरी एक्सीडेंटल डिफिकल्टीज जो हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट अवे ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। पॉसिबल ये है कि फॉर द लेट्स से इफ द प्रोजेक्ट इज 6 मंथ ओल्ड, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पहले दूसरे या तीसरे महीने में मुझे कोई और डिफिकल्टी अगर हो जाए। उसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि डिफिकल्टी अगर ही नहीं होगी, बट एटलीस्ट व्हाट आई डिड व्हाट I needed to do, right decision at the right time, okay, that I opted for a high level language. So this is important, right? Increase productivity by a factor of 5, or by making this decision I can ensure my productivity multiple times, right? जैसे अभी आपको बताया कि एक ही काम जो सिंगल लाइन ऑफ कोड से मैं जावा या सी प्लस प्लस में कर सकता हूँ, असेंबली में वही काम करने के लिए मुझे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। और अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज पे स्विच कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए इन कंपैरिजन टू द लो लेवल लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्सिटी वॉज नेवर इनहेरेंट इन अ प्रोग्राम एट ऑल। एक चीज़ ध्यान में रखें कि कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है वो प्रोग्राम में इनहेरेंट नहीं होती। ये नहीं होता कि उसे किसी विरसे में मिली है। हाँ, जैसे जैसे प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स ऐड होंगी, वैसे वैसे प्रोग्राम एक्सपेंड होगा और यकीनन वो कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा। एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात की पास्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज रिजल्ट ऑफ ओवरकमिंग। जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है वो हमें मुश्किलात को काबू करने में, उनका सामना करने में आसानी प्रोवाइड करता है। विंग रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग डिसीजन टुक लॉन्ग टाइम, राइट। इन द फर्स्ट प्लेस शुरू में डिसीजन जो हैं वो, चाहे वो प्रोग्रामिंग से मुतालिक हों या किसी और भी एस्पेक्ट से मुतालिक हों, दे माइट टेक लॉन्ग टाइम, राइट, but eventually once we are used to of it,
of course time will be reduced. अब जो है इन केस अगर प्रोग्रामिंग टास्क या डिसीजन जो है वो हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा ले रहा है, लाइक दिस इज अ डिफिकल्टी फॉर एग्जांपल वी कैन से कि मतलब क्वेश्चन अराइजेस कि एक्सीडेंटल डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटल डिफिकल्टीज इफ वी कंसीडर एसटीएलसी, there can be along the pathway of STLC, depending on the phase we are into, we may encounter different types of accidental difficulties. अगर हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो accidental difficulty could be that we don't have right people for the right job. Probably we don't have sufficient time for the planning phase, or we don't have enough budget allocated for the planning phase. ये difficulty हो सकती है. If we are into the requirements engineering phase, हमारी difficulty again similar type की हो सकती है कि let's say हमारी requirement document incomplete है, हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमें क्लाइंट जो है हमें टाइम नहीं दे रहा। डिज़ाइन फेज़ के भी मिलते जुलते डिफ़िकल्टी हो सकते हैं, कोडिंग फेज़ के भी मिलते जुलते डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय हैं वो स्किलफुल नहीं है, एम्प्लॉय हमारे छोड़ के जा रहे हैं, टेस्टिंग फेज़ के भी टेस्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, टेस्ट कवरेज हमारी कंप्लीट नहीं है, एंड सो ऑन. So let's say one of the accidental difficulty is that project is going beyond the allocated deadline. Project जो है वो deadline से बाहर जा रहा है, यानी project delay हो रहा है. If this is the difficulty, right? So what we can do, हमारे जैसे अभी हमने बात की कि उनका solution accidental difficulty का exist करता है, but we need to identify the solution, we need to trigger the solution. तो एक पॉसिबल सोल्यूशन इसमें ये हो सकता है टाइम शेयरिंग. ठीक है, टाइम शेयरिंग से मुराद ये है कि मल्टीपल जो हैं हमारे जो एम्प्लॉय हैं या डेवलपर हैं, दे शेयर ईच अदर टाइम, यानी वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें. उससे क्या हो सकता है कि पॉसिबली हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकती है, स्पेशली वो एम्प्लॉय इफ़ ही और शी इज़ नॉट स्किलफुल इनफ. तो अगर उसके साथ स्किलफुल जो एम्प्लॉय उसके साथ टाइम शेयर करेगा तो यकीन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. टर्न अराउंड टाइम अप्रोचिंग लिमिट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन. टर्न अराउंड टाइम का क्या मतलब हो सकता है? टर्न अराउंड टाइम से मुराद वो टाइम है जो कि किसी भी टास्क की अनाउंसमेंट, ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन और सक्सेसफुली उसके सोल्यूशन में जो टाइम टेकन है, दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम, राइट. और फॉर एग्जांपल एक डिफ़िकल्टी ये है कि मेरे एम्प्लॉय तो बहुत अच्छे जो हैं वो स्किलफुल हैं, बट इवेंचुअली मेरी डेडलाइन फिर भी बहुत ही शॉर्ट है इन रैन, और आई कंसिडर के मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो सर्टेन लिमिट से बियॉन्ड वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल एक घंटे में अगर किसी ने 100 लाइन ऑफ कोड लिखा है तो वो 100 लाइन कोड से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ माई एम्प्लॉय विच इज़ ऑलरेडी वेरी स्किलफुल. So what I can do is I can still apply another resource with him to assist him. I can increase their working hours. ठीक है, मैं वर्किंग आवर इंक्रीज कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी अगर 8 घंटे की हैं दिन में, आई कैन इंक्रीज इट टू 12 आवर्स. फ़ायदा क्या है, व्हाट आई वांट टू डू, बिकॉज आई एम अफ्रेड कि आई एम गोइंग टू फेस एन एक्सीडेंटल डिफिकल्टी दैट माई प्रोजेक्ट माइट गेट डिलेड. और अगर प्रोजेक्ट डिले होगा, अगर वो डेडलाइन से बाहर जाएगा तो पॉसिबिलिटी यकीन ये है कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी. आई वांट टू अवॉइड दैट. सो आई कैन अप्लाई, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट आई कैन अप्लाई मल्टीपल टाइप ऑफ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा ये तो वर्क फोर्स के हवाले से है. अदर देन दिस, आई व्हाट आई कैन डू इज आई मे यूज़ हेट्रोजीनियस प्रोग्राम्स. ठीक है, हेट्रोजीनियस प्रोग्राम्स अगर आई वांट टू यूज़, सो इन फॉर दैट रीज़न आई मे यूज़ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. जैसे अगर हम जावा की बात करें या सी प्लस प्लस की, तो आप इसको सिंपल नोट पैड में भी जावा को लिख सकते हैं, ये एक तरीका भी है. but on the other hand you are provided with some different type of editors as well, जैसे कि Eclipse है, NetBeans है, IntelliJ IDE है. इसका फ़ायदा ये है कि आपको वो साथ साथ असिस्ट भी करते हैं, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो हैं जो अकर हो रही हैं वो आमतौर पर ऑटोमेटिकली खुद ही जो एडिटर सॉल्व कर लेते हैं, राइट. सो एक तरह से जो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये एक तरह से हमें सपोर्ट टास्क भी प्रोवाइड करते हैं. सो एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टी जितना भी हमने जिक्र किया और जितना भी हम जिक्र नहीं कर सकते, इन द नटशेल इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. और बट द थिंग इज़ के वो we need to identify the solution, but at the same times we need to also make sure, we need to understand
कि ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्टेक्स्ट में जो सोल्यूशन हमने अप्लाई किया है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी वो सोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाए. सो वी नीड टू keep changing the solution at times if it is not working. This is important. जो एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टी आपको बताई है और इसके अलावा जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ जो पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे कि बार बार ये बताया जाता है कि एक्सीडेंटल डिफ़िकल्टीज़ किसी भी टाइप की हो सकती हैं. ठीक है, उनके मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं. वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के किसी भी फेज़ पे एनकाउंटर कर सकती हैं. बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. एंड इफ़ यू आर एबल टू सक्सेसफुली एंड स्मार्टली एंड इंटेलिजेंटली, if you are able to apply that solution, we may negate or even eliminate accidental difficulties. हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो उनको वो अगर ही ना हो, लेकिन अगर अगर हो भी जाती हैं तो उनका जो इम्पैक्ट या उनका नेगेटिव इफेक्ट है वो मिनिमम रहे. आई होप दिस इज़ क्लियर until now.